Wonderful. Lotus section, daffodil section. Children, please settle down. Take out your notebook. I'm giving you a minute to sit straight. When you will be sitting silently, straight, looking at me, then I will start the things. You know, the things you have done in your holidays, when you joined from home, I could see that few children did enjoy. ठीक है काफी बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन भी किया था किसी का कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी किसी का वो बैटरी लो हो रही थी राइट तो द टॉपिक वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो इन हॉलीडेज जो अभी हम करने वाले हैं बट इट वाज नॉट अटेंडेड बाय मेनी चिल्ड्रन so that's why we are repeating it you know once you will switch on to the questions then you will not be able to understand this basic thing which we are going to do now. This chapter is very important जिसमें हम 3D shapes पढ़ते हैं आपकी surface area, volume, curved surface area, whatever we studied in this class, you keep using it further in bigger, higher pictures. Suppose in 8th class you are studying about cube and cylinder. You will be using a combination of cube and cylinder in your next classes, right? So please focus on that. Before starting it, I want to ask you, do you know what are 2D shapes and what are 3D shapes? Raise your hand who know it. What are 2D shapes? And what is the full form of D, capital D, which we write? What is the full form of that? Dimensions. Wonderful. Wonderful. Daffodil section. Ekam Jot Kaur, please come forward. Okay, Gurleen Kaur. Daffodil. Mic off करके रखोगे so that there should not be any disturbance. Only the child who will come forward, they have to put on the mic. Very good. Beta, can you tell me what kind of figures are those? Which shapes are called 2D shapes? Square. Square, yes. Or? Rectangle. Rectangle, wonderful. More? Orbital? Pentagon. Yeah, pentagon. You can see polygon. कोई भी polygon हो. जैसे आपने बोला कि वो ये figure straight line से, ठीक है? That is the polygon. और ये तो मेरा आपकी straight line से बनी हुई है सारी. You know, you told me square. It is made up of straight lines. Rectangle is made up of straight line. Pentagon or any kind of figure, you can say made up of straight line. कुछ भी हो सकता है. Pentagon, hexagon, quadrilateral, anything it could be. Anything other than these, जिसमें straight line से इलावा जो बने. Please sit down. Very good, beta. Circle also a two-dimensional shape. Yes, ma'am. No, its circle is also two-dimensional. So such shape, simple paper, the way you hold it, the simple paper which I am carrying this, in which you see only the length and breadth. Such things are called two-dimensional. You can see only length and breadth here. You can see L and B here. Here also you can see different type of lengths. In square, you know L is equal to B. Okay, that is later thing you come to know in square all the sides are equal. Similarly, in circle also, whenever we draw a circle, we just see the boundary of that, okay, and we see the area inside it. It contains only area. Only area. Only area means only region. सिर्फ इसके अंदर आपको रीजन दिखता है जिसमें आप कलरिंग कर रहे हो ड्राइंग कर रहे हो द वे आई शोड यू दिस पेपर राइट you can write something on this you can draw something you can paint it wholly or on some figure so such kind of figures are called two dimensional two dimensions means only length and
breadth. सर्कल के केस में क्या होगा? Only the outer boundary, जिसको आप circumference बोलते हो, that you have studied, right? And what about 3D shapes? You have read about 3D shapes or solids. And why they are called solids? What do you mean by 3-dimensional? उसमें क्या add on हो गया? What extra thing has come in this so that it has become 3-dimensional? Very good. Control section. Raj Singh. What extra thing you can observe in this 3D shape? They are two-dimensional. Pardon? दोबारा बोलो बेटे. They are three-dimensional. They are 3 dimensions. Why we are calling them 3? Why not 2? Because they have 3 dimensions. You know, third dimension is what? It is length, breadth, and height. Extra dimension has come. Please sit down, beta. Extra dimension has come, that is height. The moment you see height in something, ठीक है, एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें मैंने एक और बॉक्स उसके साथ ज्वाइन करके I made the height also. This was L with me, this was B with me, right? I made a height also by joining some other surface. तो जैसे उसमें height आ गई, 3 आपके पास dimensions बन गई, it has become a container. Container which can contain something. We can put some liquid in that, gas in that, some solid in that. When we are putting something in that, it means it contains space. So this is the space inside the solid. Space in solid. Solid क्यों बना? Why the name is different? Because it has become a container. Right? You have a water bottle with you. Earlier, it was simple a circle, right? जिसको आपने 2-dimensional बोला. The moment you put height in that, it took the shape of bottle. ठीक है? और उसको cover करने के लिए we put another circle at the top to cover it. It becomes a container. When it became container, it becomes 3D object. Okay, this is the main difference between 2-dimensional and 3-dimensional. Now I was showing you this paper. I told you this is 2-dimensional, right? If I want to convert it into 3-dimensional, because it doesn't contain height, so what I'll do, if I fold it like this, okay, and I'm putting, closing it by putting a circle top and a circle bottom to close it, it will become a container. Okay. In market, you eat that like चना जो भेल पूरी देखा होगा आपने शॉप्स के बाहर खड़े होते हैं. What do they do? पेपर लेते हैं, उसको conical shape में ऐसे बना के उसमें डाल के they give serve it to you. It is conical shape. So what do they do? They had a simple paper, they folded it and converted it into a 3D shape by putting some base, and it is converted into some container type. And you are putting something in that. Okay, beta, this is the main difference between 2-dimensional and 3-dimensional. 2-dimensional you have already studied in your 7th class. Now you are reading more about 3D shapes. 3D shapes में आपके cuboid use हो रहा है, cube use हो रहा है, cylinder use हो रहा है, right? And you are studying about its curved surface area and total surface area and all. Have you got the worksheet, all of you? Raise your hand. Okay. Please take out assertion reason निकालो उसमें. No, ma'am. Oh, okay, you don't have. It is fine. Then look here, all of you. See, I have a cube over here. Okay. Now, how this cube has generated? कैसे बना ये? I combined, many squares from edge to edge. One square,
second square, third square at the back, fourth, fifth, and this one, sixth. Six faces को जब हमने join किया, it has become a cube, right? So what is when we talk about cube? I have a cube with me. I'm putting over here. Have you written key points of these all figures? Please write down key points. Write down the heading. Write down today's date. Please write down all the key points of this. First, we're talking about first is cube, and it is very simple to draw when you will see it. Okay, I'm drawing one once more. You know it otherwise. एक square बनाओ छोटा सा. उसके corner पे एक और square बनाओ, which is outside. ठीक है? Join all the vertices. Join them all. It has become a beautiful cube with you. Right? Now in cube, you have a base which has side L and L. Length is also L and breadth is also L because square mein all the sides are equal. Right? Then you have height also L. Height bhi aapke paas L hai isme. So in cube, L is equal to B is equal to H. That you know. Cube के अंदर क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर हैं आपके पास. So how many faces are there? Can you tell me how many faces are there in cube? Faces or surfaces? One thing. Sometimes you will see it is written surfaces of the 3D shape. Sometimes you will see faces of the 3D shape. Right? It is same thing. Surfaces मतलब flat surface. Flat. आपको flat दिख रहा है सामने, right? How many faces are there of cube? 6. 6. That you know. When we join the faces together, suppose मैंने नीचे वाला और ये right side वाला आपका join कर लिया. मैं यहाँ पे I'm writing 1 on the base surface and on the right side surface I'm putting 2. On the left side surface I'm putting 3. You also put down, visualize करो कि एक आपका पास box है. Bottom वाला number 1, left side वाला, sorry, right side वाला आपका face number 2, left side वाला number 3, right? 4 top वाला और 5 आपका हो गया पीछे वाला. What is left now? कौन सा रह गया आपका face? What is missing? टॉप, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, बैक हो गया जिसको हमने 5 डाला है, और ये फ्रंट वाला हो गया, बिल्कुल फ्रंट वाला. यू कैन पुट द एरो एंड पुट इट 6. फ्रंट वाला. लेट अस सी ओवर हियर. टॉप, बॉटम, right, left, front, back. Okay, all the 6 faces are there. Similarly, we have drawn it over here. 6 faces are there. And look for the edges. How many edges are there? Please count it in your diagram. Everybody do. Yes, raise your hand. How many edges are there in cube? Lotus section. Raise your hand. Just count it. Figure is in front of you. You can count it. Beneath chord, lotus section. Please come, Peter.
Ma'am, 12 edges. 12 edges. Who all are getting 12? Please raise your hand. Who have counted? Wonderful. You know it. Very good. Please tell me edges also. You are here only. Please tell me that also. Vertices also. Sorry. Vertices are the corners. Ma'am, 8. 1, 2, 3, 4. Right? 5, 6, 7, 8. 8 are vertices. All of you are. Please sit down, beta. Very good. All of you are getting it. Very good. Please write down the formulas now, which you are using in this class. Now you are writing, first formula is total surface area. Total surface area. We call it as TSA also. TSA is a short form of total surface area. You know how this total has come? By adding all the areas of these faces. सारे के सारे faces के areas को जब हम plus करेंगे, it will become a total surface area. You told me just now कि there are 6 surfaces. ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 6 faces L square plus L square plus L square. How many times? 6 times. आपके पास 6 faces है ना? 6 faces के area को जब आप plus कर रहे हो, it has become 6L square. It has become total surface area of 3D object. 6L square. You know why we are writing in detail? Because I want to tell you there is a relation between 2 dimension and 3 dimension. ये नहीं कि 3 dimensional कुछ और ही नई चीज है. वो कहाँ से बनी है 3 dimensional? By combining all the 2D shapes. ठीक है? एक 2D shape हमने बेस पे ली, उसके साथ दूसरी 2D ज्वाइन की, उसके साथ दूसरी की, फिर तीसरी की, फोर्थ की, फिफ्थ की एंड सिक्स्थ की, सबको जब ज्वाइन किया, इट हैज बिकम a 3-dimensional shape. So all the areas of 2 dimensions, 2 dimensions की क्या था वो? What was that? Was a square. Square का area क्या है? Side square. L square you can say. So we are combining all the L square, L square, L square and getting 6L square as the total surface area of the cube. Similarly, your next formula is curved surface. Curved surface area. We call it as curved surface area or lateral surface area. Lateral surface area. Short form I'm writing over here. And you call it CSA or LSA. ठीक है, कई बुक्स में आप देखोगे CSA लिखा हुआ है, कहीं पे LSA लिखा हुआ है. That is one thing. They are saying. Okay. अभी curved surface area में क्या है? When we have an object like this, curved surface area, it means we are talking about only the surrounding. Only the surrounding. We are not counting the top and bottom. You consider it as a hollow. Hollow का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे ये पेपर था मेरे पास, this was a rectangular. ठीक है, जब मैंने इसको फोल्ड किया था, I folded it like this. Right, 2D से मैंने इसको 3D में बनाया, but 3D is, you know, it is not that. इसकी base और जो ऊपर जो top है, they are empty. It is hollow. अंदर से खाली है. तो जब खाली है, we are considering it as CSA of that object. Only उसकी surrounding. Similarly, cube के केस में surrounding सिर्फ उसके आसपास. अगर आसपास की बात हो रही है, then we are talking about only those spaces. सिर्फ उन्हीं surfaces की बात करेंगे जो आपके surrounding में है. How many are they? Please count it. Which are on the surrounding? Surrounding 1, Ma'am, 4. 3, 4. 4 आसपास वाले. माइनस कौन से हुए? टॉप वाला और बॉटम वाला. 6 में से 2 माइनस हो गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 4L स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो 6L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर. यू शुड नो कि हमने इसमें से कुछ सबट्रैक्ट किया है, तब जाके हमारे पास एक बना है वो कर्व सरफेस एरिया. ठीक है बेटा, जितने भी आपके फॉर्मूलाज बनते हैं उनका कुछ लॉजिक होता है. दे हैव अ कंसेप्ट बिहाइंड दैट.
It's not that कि आपको just formula learn करना है और apply करना है. Don't do that. Because in this chapter generally sometimes they are talking about height of water, sometimes they are talking about air in the container, this that. So आपको basic knowledge उसकी होनी बहुत जरूरी है. Figure की उसकी depth में पता होना चाहिए कि at this time we are talking about surrounding or we are talking about bottom and this height, bottom and top also. Okay, whatever. So this is the way you have to break the figure and understand. Let us talk about the next one is cuboid. Please keep them safe, beta, for next classes also. You are using this in other classes also now. And these are the basic things. We are going to draw cuboid now, which is very similar to cube. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें लेंथ जो है इट इज अ लॉन्गर देन ब्रेड. ओके, आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर क्योंकि मेरी स्पेस नहीं है. आप यू कैन ड्रॉ एट एनी कॉर्नर अपनी मर्जी से. ओके, प्लीज ड्रॉ इट नीटली. You have lines in the register. You can utilize it. लाइंस पे बहुत सीधी सीधी आपकी लाइंस आएंगी, स्केल्स की जरूरत नहीं है. प्लीज ड्रॉ स्टडीली. इसको पकड़ो, पेन को टाइटली पकड़ो एंड ड्रॉ इट. इट विल कम आउट ब्यूटीफुली. ओके बेटा, लेट अस राइट डाउन डायमेंशंस फर्स्ट कि क्या क्या हमें दिख रहा है इसमें. एल बी एच. क्यूबॉइड में आपके पास L is not equal to B is not equal to H. They are not equal to each other. Height is different, breadth is different, and length is different. By chance हो सकता है किसी क्वेश्चन में breadth और height मिलती हो, but it is very rare. They are different from each other. Before writing the formulas, I want to show you a cube. Please see here. This is a cuboid, sorry. You can see rectangular from here. When I move like this, then also you see a rectangle. When I move like this, then also you see a rectangle. So all the surfaces are made from different rectangular faces. Two-dimensional shapes की को हमने combine किया and it came out to be a 3D shape. Two-dimensional rectangle. इसको हमने दूसरे 2 डायमेंशनल से ऐड किया, फिर दूसरी एक और 3 डायमेंशनल लगाया, या सॉरी यहाँ पे बनाया, इसका रेक्टेंगल बनाया 2 डायमेंशनल, फिर एक और ज्वाइन किया. द मोमेंट वी ज्वाइन एंड इट बिकेम टू बी अ बॉक्स काइंड 3D शेप आपके पास बन गई, जिसमें आपको एल बी और हाइट के बारे में पता है. ठीक है, द फिगर यू हैव ड्रॉन, प्लीज मेंशन एल फर्स्ट ऑफ ऑल. कि एल कहाँ कहाँ दिख रही है आपको. मेंशन ओनली द लेंथ. दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ पीछे वाली, this is the length, this is the length. Also mention it. Write down only L in the figure. Only L. Now tell me, when you are using L, तो कौन-कौन से faces use कर रहे हो आप? Visualize करो 3 डायमेंशनल शेप को. कौन-कौन से सरफेसेस आपके यूज हो रहे हैं इसमें? हमने देखा, देखो एल, हमने आई एम राइटिंग वंस मोर. इसको थोड़ा सा और मैं पास करके लिखती हूँ सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए. इट इज एल. आई एम राइटिंग ओवर हियर. दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल. जब हमने एल एल को लिखा, कौन से फेसेस यूज कर रहे हैं हम? दिखाई दे रही है. आई मीन टू से दैट sunflower section, sunflower, Abhijot Singh, mic on everything. Sunflower, Abhijit, please come. Can you tell me LL जो हमें लेंथ दिखाई दे रही है इसमें, वो कहाँ कौन कौन से सर्फेसेस है?
बैक वाला है, टॉप वाला है, बॉटम वाला है, या फिर कौन सा है, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, कहाँ पे है? टॉप एंड बॉटम, वेरी गुड। रेज योर हैंड हु कैन सी टॉप एंड बॉटम ओनली, सिर्फ टॉप एंड बॉटम पे आपको लेंथ दिख रही है। प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड। रेज योर हैंड। बॉटम पे आपको येलो रेल दिखाई दे रही है, पीछे, आगे और पीछे। सिमिलरली टॉप पे आपको येलो रेल दिखाई दे रही है, वेरी गुड। नाउ राइट डाउन बी, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। प्लीज राइट डाउन बी, ब्रेड्थ कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है आपको? विजुअलाइज करो कि एक बॉटम वाला सरफेस है, आई एम राइटिंग ओवर हियर, यू कॉपी डाउन मत करो, अपनी नॉलेज से लिखो। आपने बोला कि 4L थे आपके पास, 4L कहाँ पे थे? टॉप एंड बॉटम पे थे, ठीक है। अब आपके पास 4B भी दिखाई दे रहे हैं आपको, लिख लिया सबने? ब्रेड्स, सारी ब्रेड्स को हमने लिख लिया, जितनी भी ब्रेड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे आर कमिंग ऑन विच फेसेस? रो सेक्शन, फर्स्ट कर्ल बेटा, मिडल रो। कैन यू टेल मी कौन कौन से सर्फेसेस पे हमें ब्रेड दिखाई दे रही है? वेरी गुड। Top and bottom. टॉप एंड बॉटम, अगेन टॉप एंड बॉटम, वेरी गुड। किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज टेल मी। I hope you can understand. Top and bottom, we can see breadth also. Let us write down about height. Height is here, here, here. Again, 4H has come. 4H भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हाइट आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? टेल मी द फेसेस, कौन कौन से फेसेस पे हाइट दिखाई दे रही है? वेरी गुड। सनफ्लावर, नव कमल सिंह, यू कैन विजुअलाइज हमें हाइट कौन कौन से फेसेस पे दिखाई दे रही है? Yes. And sides. Pardon? रिपीट करो बेटा, क्या बोल रहे हो? Sides. Side, left, right, and left side and right side. Okay, sit down. They are both sides. ठीक है, दोनों साइड्स पे आपको हाइट दिखाई दे रही है, राइट वाले साइड एंड लेफ्ट वाले। ओके, सो नाउ वी आर राइटिंग फेसेस। फेसेस यू नो इट इज सेम काइंड जो आपने उसमें किया था क्यूब में, सेम ही केस यहाँ पे बनता है, आपने पहले किया भी हुआ है। 6 फेसेस है, 12 एजेस है, ठीक है, एंड आपके पास वर्टिसेस जो है वो 8 है। It is of same kind. Now we are writing total surface area, TSA. I am writing in short form now, TSA of cuboid. अब TSA of cuboid में क्या क्या आएगा? उसमें तो हमने L square, L square, L square 6 times कर लिया. What we will do now? Although you know the formula, but formula वो बना कैसे है? जो आपने याद किया होगा. कौन कौन से areas add up हो रहे हैं to becoming total surface area of cuboid? Everybody think of it. I will call you. I'm giving you 2 minutes to think it. Very good. कौन से एरियाज हम प्लस करें कि हमारे पास उसका टोटल सरफेस आ जाए? हमारे पास सारे सरफेसेस क्या हैं? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? यू नो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B, सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल वाला।
वही 2 डायमेंशनल वाला वी आर गोइंग टू यूज हियर नाउ। ठीक है, अलग अलग आपके पास सर्फेसिस है, टॉप बॉटम। टॉप एंड बॉटम के पास क्या डायमेंशन है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको दिख रहा है सिर्फ टॉप। अगर टॉप और बॉटम की बात करें, बॉटम भी आपको सिर्फ एल और बी दिखाई दे रहा है ना, तो उसका एरिया क्या होगा? एल बी। सिमिलरली टॉप वाले में क्या दिखाई दे रही है डायमेंशन? एल एंड बी। अगेन वी आर एडिंग इट, प्लस एल बी। ओके, नाउ कम टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कौन सी डायमेंशन है आपके पास? 2 डायमेंशन कौन सी है? बी एंड एच। कैन यू सी बी एंड एच? तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? वेरी गुड, जल्दी से बता दो। विल इट बी बी एच? रेज योर हैंड हु अंडरस्टैंड कि बी एच होगा इसका, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है बी एंड एच इसमें। वेरी गुड, इट इज बी एच। सिमिलरली राइट साइड पे अगेन बी एच प्लस, अब हमारे बच गए फ्रंट एंड बैक वाले। फ्रंट साइड पे आपको क्या डायमेंशन दिखाई दे रही है? एल एंड एच, राइट? इट विल बी एल एच। Similarly, at the back, you can see L and H. So ये आपकी सेग्रीगेट करके डायमेंशन जो है वो अलग अलग आई है अकॉर्डिंग टू योर नीड। क्वेश्चन में जिस चीज की आपको जरूरत होगी आप उनको यूज कर लोगे। Are you understanding this one? कि how we have found all the areas? Please raise your hand. Have you understood this till here? Very good, very good. क्वेश्चंस को बेटा लर्न नहीं करना कि हमें इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें वो लगाना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ के ये सोचना है कि हमारे से पूछा क्या क्या है, right? If you're talking about the 4 walls, it means we are using the surrounding. सिर्फ हम आसपास की बात कर रहे हैं 4 walls की, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के। ठीक है, तो ऐसे ही आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने एल बी एल एच या फिर एच बी यूज करना है। तो आपके पास फॉर्मूला कहाँ से बना ये? 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL, जिसको आप लर्न करते हो इन दिस फॉर्म 2LB plus BH plus HL. This is the formula. It is told to you and you use it in the questions. Fine, beta. Till here it is clear. Let us write down next one. CSA or LSA. Curved surface area or electric surface area. Now we are talking about. ठीक है, अभी CSA में क्या होगा? CSA में क्या हो रहा है? फिर से आपके पास क्या चीज हो रही है? सिर्फ सराउंडिंग। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हम उसके सिर्फ सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके आसपास की। टॉप एंड बॉटम को माइनस करके हमने टॉप वाला एरिया भी माइनस कर दिया, नीचे वाला एरिया भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? CSA। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या करेंगे? साइड वाले अगर हमने माइनस करने हैं तो क्या माइनस करेंगे? HL को माइनस करेंगे, BH को माइनस करें या फिर LB को माइनस करें? थिंक ऑफ इट। टॉप एंड बॉटम को हम माइनस कर रहे हैं। टॉप एंड बॉटम, टॉप में हमारे पास क्या था? LB एंड LB, टॉप एंड बॉटम में। तो हम LB को माइनस कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? 2BH plus HL. This is the formula you are getting for CSA. ओके, और शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाता है कि 2 और इसको H को कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास आ जाएगा B plus L. ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बेटा यू कैन राइट डाउन CSA को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हमारे पास CSA मतलब इन एरियाज को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। Write down in bracket for your understanding that we are not considering top and bottom in this figure.
नाउ जस्ट नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि एक क्यूबॉइड था, तो आपने क्या किया, इसका सीएसए किया। सीएसए का मतलब इसकी सराउंडिंग की बात की। देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स? आप जिस रूम में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन क्लासरूम, इफ यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ फोर वॉल्स, वॉल्स मतलब योर सराउंडिंग एक्सक्लूडिंग योर रूफ, एक्सक्लूडिंग योर फ्लोर। ठीक है, फोर वॉल्स की बात हो रही है, इसका मतलब आप अपनी सिर्फ वॉल्स की बात कर रहे हो रूम में। फोर वॉल्स, तो फोर वॉल्स किससे मैच कर रहा है आपके पास? सीएसए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑल्सो। ठीक है, यू हैव कम टू नो कि जो हमारा सीएसए होता है वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी होता है। सेम फॉर्मूला इज यूज्ड। Okay. Next, you have studied about cylinder in this chapter. Next time you will get the module, then we will do questions also. Let us do about cylinder. Third one. Have you done in class, beta? Cylinder questions किए हैं आपने? Concept of cylinder have you done? Please raise your hand and tell me. Have you done it? Yes. Good. Good. Please draw it. It is of this kind. Cylinder is like your bottle. It is like this, which contains two circles. ऊपर और नीचे आपके पास सर्कल है, सर्कुलर फेसेस है, एंड सराउंडिंग में आपके पास कर्व सरफेस है, राइट? सो दिस इज द हाइट ऑफ दैट, इट इज 2 pi r, दिस इज ऑल्सो 2 pi r। ऊपर और नीचे आपके पास सर्कुलर फेसेस हैं जिनका हमें सर्कमफ्रेंस पता है 2 pi r, और साथ में आपके पास हाइट है। You know, earlier you had a rectangular sheet. सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी, जैसे मैंने अभी आपको फोल्ड करके दिखाया था। रेक्टेंगुलर शीट को हमने जब फोल्ड किया, इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर। तो कैन यू टेल मी कि अगर हमने रेक्टेंगुलर शीट को कन्वर्ट करके सिलेंडर बनाया तो एच कहाँ आएगा और 2 pi r कहाँ आएगा? सिलेंडर इसमें आपके पास लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी, रेक्टेंगल में? हमने क्या किया था, रेक्टेंगल था हमारे पास, रेक्टेंगल को फोल्ड करके हमने एक सिलेंडर शेप दे दी। तो अभी सिलेंडर की उसकी लेंथ जो थी इसकी रेक्टेंगल की, वो क्या चीज बन गई इसकी? लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल, और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी वो उसकी क्या बन गई? हाइट। सो इट इज लाइक दिस, दिस इज 2 pi r and this is your h. You have such kind of question also in which you change a rectangular sheet into. Are you getting the worksheets now? Row section bache, are you getting it now? Module of this surface area? Yes. Okay. Okay. Please take it, beta. Yes. Very good. We can do few assertion reason from there. Please draw this rectangle also in which your length is 2 pi r, जिसको फोल्ड करने से हमारा ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन रहा है, and the breadth of rectangle is converting into height of cylinder. Okay, write down. Cylinder has three surfaces or faces, three faces. कौन कौन से हैं? Two circles and one, दो तो सर्कल दिख रही हैं आपको ऊपर और नीचे, और साथ में और क्या दिख रहा है? One curved surface, जो आपकी सराउंडिंग है, जिसको हमने घुमा के बनाया। टू सर्कल्स हैं एंड वन कर्व फेस है। ठीक है, तो आपके पास टीएसए क्या होगा इसका? टीएसए, टीएसए का मतलब
वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। ये इस बॉटम वाले सर्कल का, टॉप वाले सर्कल का एरिया एंड दिस सराउंडिंग ऑल्सो, पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेंडर। वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सिलेंडर। तो कंप्लीट सिलेंडर में TSA मतलब area of all the surfaces, that is 2 pi r square plus 2 pi r h. Why 2 pi r square? क्योंकि हमारे पास दो सर्कल है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दो हमारे पास सर्कल के एरिया है और एक हमारा उसके सराउंडिंग, दैट इज 2 पाई आर एच। तो ये आपके पास क्या बना? हाउ डू यू लर्न इट? How it is represented in the books? It is written as 2 pi r. 2 pi r आप common लेते हो and inside you write it r plus h. It is written like this, which you learn it. Okay. But before learning it, please understand deeply how it has come. किसी ने यहाँ पे r की जगह अगर h लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, the question will be totally wrong, formula will be wrong, right? Because आपने रट्टा लगाया हुआ था, you learned it this way without understanding, that's why you're writing wrong. Please understand how it has come. 2 pi r कहां से आया और r plus h कहां से आया? ओके बेटा, ये टू सर्कल्स के एरिया है और ये हमारे पास 2 pi r h है। 2 pi r h कहां से आया? यहां से रेक्टेंगल को जो हमने सराउंडिंग बनाया, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? L into B। L into B में हमारे पास क्या क्या है? 2 pi r into h। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो इसको, how 2 pi r h has come। ठीक है, जब हम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम टॉप का सर्कल का एरिया लिख रहे हैं, बॉटम का सर्कल का एरिया लिख रहे हैं। इसका एरिया कहां से आया? फ्रॉम द रेक्टेंगल, क्योंकि आपने रेक्टेंगल को घुमा के उसको रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई थी। ठीक है, वो जो शेप बनी थी उसमें क्या क्या था? एल आपके पास 2 पाई आर था और एच आपके पास, बी आपके पास एच था। दोनों को मल्टीप्लाई करके एल इंटू बी करके हमने ये फॉर्मूला निकाला 2 पाई आर एच। From this, the formula has become, and you have reached here, which you learn in books as it is, right? You learn it as it is. Fine. Similarly, CSA. When you write about curved surface area, now you tell me कि curved surface area में क्या माइनस करने वाले हो आप? माइनस क्या होगा इसमें? Can you tell me? Curved surface area, CSA. We are talking about surrounding. पिछले डायग्राम जैसे हमने किया था वैसे सेम वे। Sorry, what we are subtracting from here? We are subtracting the top and we are subtracting the bottom. तो वो क्या चीज है? 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बन गया? 2 पाई आर एच। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर योर कर्व सरफेस एरिया। Is it fine? Please understand deeply beta now. Revise it. Next time we'll do questions. Module is with you already. Next time we will start it. Okay? Chalo. See you next time. Bye bye.